centers, places nowhere near any military facilities. And that is what we're expecting to happen now. That's why everyone in Israel was woken up this morning by sirens and by emergency alerts on our phones saying, make sure you know where the nearest boat. Okay, we get the first reaction. Give me a moment. First reaction from U.S. President Donald Trump. America's president has responded to the strikes that have just taken place. Iran can never have a nuclear weapon. This is the U.S. President Donald Trump making very clear that Iran can never have a nuclear weapon. Donald Trump's first statement, Iran can never have a nuclear weapon. The United States is also saying that the strikes. The objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels and international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen, and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal. Something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it. They can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to build their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message.
For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We're going इस वक्त ये तमाम तर सूरत हाल ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में देखी जा रही है, जहां पर अब से कुछ देर पहले धमाके सुने गए और उसके बाद ये खबर आई कि ईरान में तेहरान के मज़ाफ़ात में धुआं उठता भी देखा गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट में मुतादिद मिसाइल गिरे हैं और ईरानी मीडिया की जानिब से भी ये रिपोर्ट किया गया है कि धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और धुएं के बादल भी देखे गए हैं। मजीद इसकी तफसीलात Dayal, what are those focal points on which Iran was not agreeing and United States was stressing, because we've seen the most recent happened on 26 that has failed, and that's the reason probably we are seeing these strikes that are taking place right now. You know, Mr. Brahmacharya very correctly pointed out that the Omani foreign minister had given hopes by saying that peace is within reach and that Iran has agreed to no nuclear material stockpile. How? कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके हुए हैं, तेहरान में धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, इस बात की तस्दीक इसराइली वजीर दिफा भी कर रहे हैं। तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट में मुतादिद मिसाइल गिरे हैं, इसराइली शहरों में सायरन बज उठे हैं, तालीमी इदारे बंद हैं। इसराइली हुकाम की शहरियों को महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल होने की हिदायत इसराइल भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दरपेश खतरात के बाइस ईरान पर पेशगी हमले किए गए हैं। इसराइली वजीर दिफा की जानिब से ये बयान सामने आया है। तो इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके हुए हैं, तेहरान में धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और इसराइली वजीर दिफा ने भी इसकी तस्दीक की है। तो जमील अहमद साहब बड़ी अहम बात की है जौहर सलीम साहब ने, उन्होंने कहा कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है, अभी अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ है, अभी इब्तदाई तौर पर इसराइल ने ये हमले किए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मोर प्रेशर ईरान के ऊपर बिल्ड किया जाएगा? इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ इसराइल की जानिब से की जा रही हैं और फिर बाद में आगे जाकर फिर अमेरिका इसको ज्वाइन करेगा। और सबसे अहम चीज़ ये है जो नुक्ता दिया है जौहर सलीम साहब ने कि क्या किरदार होगा रशिया का और चाइना का इस वॉर को लेकर। रशिया और चाइना। और खबर ये है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और अब बता रहे हैं ईरान पर हमला कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने इस बात को कंफर्म किया है कि ईरान पे हमला कर दिया गया है, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर हमला किया गया है, ईरान पर पेशगी हमले शुरू कर दिए गए हैं इसराइल की जानिब से, ये कंफर्म किया जा रहा है। तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके को मुतादिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। इसराइल भर में स्कूल बंद है, अवाम को घर से काम करने की हिदायत, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई है इसराइली फौजी हुकाम के मुताबिक। और इसराइल ने ईरान पर एक बार फिर हमला कर दिया है। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक उन्होंने तस्दीक की है तेहरान में शदीद धमाकों और धुएं के बादल उठने की इतलात भी मौसूल हुई है। इस फुटेज में भी देखा जा सकता है तेहरान में इस वक्त शदीद धमाकों और धुएं के बादल ये उठते हुए देखे जा सकते हैं। और इसराइल में भी सायरन की आवाजें सुनी गई हैं। तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके को मुतादिद मिसाइलों ने निशाना बनाया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मासूद खान साहब हमारे प्रेजेंटेशन होता है और अगर इसके अंदर अमेरिका शामिल भी था तो ये उसके लिए भी बहुत अलार्मिंग बात होगी। एंड दिस इज समथिंग दैट इन माय हम्बल ओपिनियन वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं अगर आप इरानियन टेरिटरी पे, वहाँ पे ना एक जरूर रेसिप्रोकल स्ट्राइक आ सकती है। और वो सिर्फ फिर
देखें टेल अवीव तक या जेरूसलम तक लिमिटेड नहीं रहेगी, फिर उसका इम्पैक्ट खासकर जब प्रॉक्सीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिस तरह चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कोई भी रोक नहीं सकता उसका इम्पैक्ट आने पे कि वाशिंगटन तक भी आ सकता है। और इसके अलावा देखिए, अब जहाँ तक मैंने अब दोबारा बात की कि अगर हिजबुल्लाह इन्वॉल्व होता है तो इसराइल का नॉर्दर्न बॉर्डर भी अफेक्ट हो सकता है। इराक और जितने भी प्लेसेस है, फॉर एग्जांपल जहाँ शिया मिलिशियाज एट द एंड ऑफ द डे अलाइन करती थी प्रीवियसली विद तेहरान, तो दिस मे डेफिनेटली थ्रेटन यूएस एंड इजरायली इंटरेस्ट अक्रॉस मल्टीपल फ्रंट्स। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो हमने Navy, their missiles, their missile manufacturing, they have whatever capabilities they have will be obliterated. He's made that very clear. Iran will never pose a threat to any country in the future. Very, very strong statement from the American president, and he's telling the people of Iran, as of now, stay home. But the moment there's the opportunity, there will be a regime change. Your only chance to change the regime in Iran. And we will listen to that entire statement once again. They will destroy Iran's missiles. And I first want to get in a word from Ilahi Jamali, an Iranian activist who joins us on the show. Music to your ears, Ms. Jamali, that this is indeed now a regime change operation. Absolutely. I welcome the president's statement. This is going to be reassuring. Of course, Iranians will.